Okay, so first of all, our concern is the hormonal imbalance. Firstly, Fiza has told us what hormones are and what they eh, do is what is our concern. So, majorly, hormonal imbalance is something that we are facing in a lot of women nowadays. Like approximately 52% of the women of Pakistan are having PCOS or any type of hormonal imbalance. That means approximately 50% or like half of the women. So this is the concern that we have to make them healthy. And to Napoleon saying we have to improve it, like a healthy woman will make a healthy nation. So we want to enhance the health of the woman. And whenever I talk about this topic, I say it's not a topic for a woman, it's topic for the family. So if there are the male as well, so they should be concerned about their female sufficiency. They could be their sisters, they could be their mothers, they could be their daughters. So they should be concerned about their health too. So if we talk about the stages of life, we are not talking about all the seven stages, but those stages that really that have the impact on your health. That is infancy. In infancy, if a woman, even a male, baby is not fed properly, is not having the complementary diet at time, you can. Okay. So, in infancy, it happens that if your diet is not proper, exactly, it gonna come into your puberty. It is very important. It is very significant that during the time of gestation, if the mother is taking proper health precautions, proper diet, and proper physical activity, then the infancy will be healthy. But if infancy is healthy, then your puberty will be healthy. So at the time of puberty, there are many changes that happen in the male body as well as in the female body. And those changes, if not are going into the a normal pathway, it means you are going toward the hormonal issues in your reproductive age. And after the reproductive age comes the menopause, where the woman reproductive system has done all of his work and is not, it will not be significantly working. So if we Okay. The concern of slides you can ask at at the end of it, but yes, you can. Yeah. Okay. So puberty is the first step where your hormonal issues will begin, right? So this is where we are concerned. Where the hair growth will be increased, where your voice will change, where your growth to females especially, where their height will no more increase after puberty like significantly. That would not increase. So here we are. If we will make a girl really healthy at the time of puberty, if we'll work on it, then surely she will be healthy at the reproductive age and at the menopausal. So what we have today is the hormonal imbalance. And in the hormonal imbalance, we talk about four of the major hormones. Those are involved in female reproductive system. Those are estrogen, progesterone, LH and FSH, follicular stimulating hormone, luteinizing hormone. And along with these four hormones, there is another hormone that is the testosterone hormone, that is majorly the male hormone. But when your estrogen and progesterone are not working properly, yes, exactly, the amount of testosterone will increase in your body. And what happens, it happens that you will are going to have the manly features, like you will have facial hair, your voice will be changed, and there will be lots of other issues. So what we have to do is we have to make these hormones work properly. These are the hormones. Those estrogen and progesterone are produced in your ovaries, and LH and FSH are linked with your brain, and they have direct role in estrogen and progesterone. So if we talk about estrogen, estrogen is really a significant hormone in your reproductive health, and it is involved in your the normal menstrual cycle and again the normal reproduction. And again, when we talk about progesterone, it helps in the implantation, and it is really significant when we talk about the fertility issues. So at first, it is not a significant issue. Okay, fine, you're thinking कि बस जी अब जो है ना कोई मसला नहीं है, फेशियल हेयर आ गए, लेजर करा लेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं हमारी, जाके फेशियल वैक्स भी होती है, अब सारी चीजें आ गई हैं, फेशियल इरेजर्स
जिंदगी आसान है यार, चल रही है, वी विल डू इट. उसके बाद फिर ब्लीच व्लीच कर लेंगे, बड़े मेकअप शेकअप करके वी विल बी अप, राइट. सो इट्स नॉट अ मेजर इशू, कोई ज्यादा मसला तो नहीं हो रहा. अच्छा वेट गेन हो गया तो फिर हम कहेंगे स्टॉप बॉडी शेमिंग, क्या हो गया है, व्हाई यू आर फिगरिंग आउट कि जी पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता. यानी हमारी ये एक वो लेवल होता है जिसका आप डेट हो रहे होते हैं. ट्रूली यू आर बिकमिंग, यू आर बिकमिंग द हार्श टू योरसेल्फ इन रियल, नॉट टू द अदर्स. आपको साइंस फील हो रहे हैं, यू आर गेटिंग द सिम्टम्स, बट यू आर लाइक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं. So this is not the time at the student life, at the time when you are, you are into your home, it is not a problem. But when you come into your marital life, it becomes such a significant issue that majorly those women who are having hormonal imbalances and are having PCOS will be infertile. Majorly it happens, but with PCOS, fertility is possible still. So it happens कि जी इनफर्टिलिटी है, फिर ससुराल की बातें सुननी है, फिर अजीब किस्म का डिप्रेशन भी होना है. एंड देन दे कम अप टू डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस एंड एवरी काइंड ऑफ टोटका जी, बस आज तो कुछ रह. ऐसे यकदम जिंदगी में चेंजेस नहीं आते. सो once you are feeling that something is happening inappropriate, that should not be happening in your body system, think about it immediately. Do not wait for it to get worsened. यानी जब तक ना चाहें, जब तक आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, जब तक ये आउटडोर का केस है तब तक उसको जो है वो डॉक्टर के पास ले जाए. So हमारे पास साइंस क्या आएंगे सबसे पहले. If you are feeling tired and fatigued, first of all, for all the signs, I know all of the females are majorly having it, but it does not mean that you have hormonal imbalance. So do not jump onto conclusions. I'm not diagnosing anybody. तो हम टायर्ड, तो हमारी पूरी जो है ना वो नेशन इस वक्त टायर्ड है. सो टायर्ड एंड फटीग इज नंबर वन. Then you have hair loss, right? Hair loss on, the parts like your hair, majorly your skull hair, like your on your head. It's like those hair, you will have a hair loss majorly. But on the other side, your facial hair, your body hair will be increasing a lot. Then irregular menstrual cycle, a problem of every girl. Every girl is talking about it, but not every time it is because of. But this is the first significant, indication of that you can have hormonal issue. Then weight gain or inability to lose weight. Weight gain is possible for everyone. जी आप यूनिवर्सिटी में 4 5 6 दिन बाहर से ही खाना खाते हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी से क्या, आप यूनिवर्सिटी से दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट भी चले जाते हैं. तो ये सारा खाने के बाद भी वेट गेन बनता है, ठीक है. उसके लिए जरूरी नहीं है कि हार्मोनल इम्बैलेंस ही हो, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि आप डाइट भी करें, आप एक्सरसाइज भी करें, लेकिन वेट लूज होता ही नहीं है. अब समझ नहीं आ रहा, सारे टोटके अपना लिए लेकिन वेट नहीं लूज हुआ, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है और यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर ऐसे कोई चेंजेस आ गए हैं जो आपकी बॉडी में डाइट इमीडिएटली या आपकी जो चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, फिजिकल एक्टिविटी की चेंजेस हैं, वो इम्पैक्ट नहीं कर रहे. तो इसका मतलब है कि समथिंग इज वियर्ड हियर एंड यू शुड बी नोटिसिंग इट. Then is premenstrual dysphoric disorder, like it is about PMS, mood swings है जी बहुत ज़्यादा. Mood swings तो वैसे females में वैसे भी होता है. It's not a hormonal issue, but still mood swings on, especially when you are about to come into menstrual, आपको menstrual cycle के time होने वाला है. You're like उसको भी मार दो, उससे भी लड़ लो, घर में उससे भी लड़ लो. You're feeling like बस मुझे हर इंसान से आदम बेजार हुए मैं आप बिल्कुल. So this is insomnia. Insomnia not because of your seasons, okay? It's not because you're watching a season and you're not sleeping, but insomnia that you're trying to sleep but you are unable to sleep. So this is another symptom of, imbalance. Then acne, but acne majorly around your chin, on your jawline or below your jawline. ये 3 positions हैं majorly: on your chin, below your jawline and on your jawline. अगर आपके एक्नी वहां पर ही मेजरली पहुंची और वो पेनफुल बम्प्स बनता है, तो इसका मतलब है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है. एल्स अगर आपकी स्किन पे एक्नी बनती है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है. तो यानी वो एक्नी की भी वजूहात हो सकती हैं, बट दैट इज नॉट हार्मोनल इम्बैलेंस. हार्मोनल एक्नी आपकी मेजरली आपके चिन के एरिया पे होती है.
फिर again, yes, exactly, when you are getting married and you are having the issue of infertility. तो causes क्या हो सकते हैं? डाइट सबसे बड़ी वजह आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की डाइट है। आप देखें, ये प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होते थे हमारी अम्मा की जनरेशन से। कभी जाके पूछिए, डू यू एवर नो पीसीओएस? दे विल बी लाइक, ओह व्हाट इज पीसीओएस? सो it is really true that they never had experience majorly, or might be, you can say, it was not that much high but not diagnosed, but the issue was not this much, on hype, because they were eating pure, they were eating natural, they were not having, their university lives, their college lives were not like ours. Our life is like, एक lecture लिया उसके बाद चलो जी बाहर नाश्ता करके आते हैं, दूसरा lecture लिया, दूसरा lunch भी कैफे में कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर आए, नहीं खाने का दिल नहीं है, रात को बहन भाइयों को कहा चलें जी आज कोई बाहर से ऑर्डर करें. So it happens like in every young female and male's part, it is happening like 4 or 5 days a week. So it is very frequent. और जब आप बाहर से खा रहे हैं, याद रखिए, जब तक आप बाहर से खा रहे हैं, ठीक है, तब तक आपका मैदा यानी आपका स्टमक और आपका जिगर यानी आपका लिवर हेल्थी नहीं हो सकता. हार्मोनल इम्बैलेंस तो एक तरफ, आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ भी अच्छी नहीं. सो अपने बाहर के खाने को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करें. और अगर आपको ऑलरेडी ये इश्यूज हैं तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग लंच बॉक्स लेके जाना शुरू कर दें. फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है जी, एक नंबर पे स्ट्रेस है हमारी लाइफ में. एक नंबर दोस्त का ज्यादा आ गया, इंतहाई स्ट्रेस, राइट. घर में अम्मी ने डांट दिया, स्ट्रेस. फोन पे कोई अजीब किस्म की हर वक्त वीडियोस आ रही होती हैं व्हेन यू गो टू फेसबुक एंड सच सोशल मीडिया साइट्स. मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं है एज की, कोई पता ही नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ही इज ऑल ड्रेन्ड इन ब्लड एंड यू आर लाइक वाचिंग दैट. सो इट्स नॉट दैट लाइक यू आर डायरेक्टली टेकिंग द स्ट्रेस, इनडायरेक्टली भी एक आपके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है. आप न्यूज चैनल लगा लें, हर वक्त स्ट्रेस. सो इफ यू हैव योर फ्रेंड्स एंड बडीज, उनमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर वक्त स्ट्रेस. सो स्ट्रेस factor is a lot in females nowadays. छोटी बात का स्ट्रेस है. अम्मी ने डांट दिया, मार के काम आ गया, टीचर ने कुछ बोल दिया, दूसरी दोस्त की तारीफ हो गई. So these are all the problems that are becoming stressful factors. तो स्ट्रेस बहुत बड़ा एलिमेंट है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खराब करने के लिए. उसके बाद है जी फिजिकल इनएक्टिव. अम्मी मैं यूनिवर्सिटी से बहुत थक के आई हूँ. I believe majorly I have students here, that is why I'm categorizing all the university students. Acne treatment, we'll talk about it. Okay, so physical inactivity. यूनिवर्सिटी में क्या किया, क्लास ली और फिर दोबारा अगर क्लास से दूसरी क्लास में भी गए, और चले माना आपकी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होगी, फिर भी इट इज नॉट माइंडफुल वॉकिंग. रिमेंबर, माइंडफुल वॉकिंग से फिजिकल एक्टिविटी काउंट होती है. अपने कमरे से उठ के किचन में पानी लेने जाना इज नॉट वॉक, इज नॉट फिजिकल एक्टिविटी. जब आप इस नियत से उठेंगे कि अब मैंने वॉक करनी है और आप वॉक करेंगे, तो तब वो काउंट होगी इनटू योर फिजिकल एक्टिविटी. घर में आटा गूंदने से और ये बर्तन धोने से, यानी इस तरह के कामों को भी आप अपने फिजिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं कर सकते. हाँ, उनसे आपका स्ट्रेस फैक्टर कम होता है, एक्टिविटी होती है, बट दैट कैन नॉट बी एडेड इनटू योर फिजिकल एक्टिविटी. यू हैव टू डू माइंडफुल एक्टिविटी. तो बस हमारा ये होता है यूनिवर्सिटी में बड़ा चल लिया बेटा घर आके. So we are majorly physically and inactive, and then when we have our gadgets in our hand, आपके पास tab है, आपके पास phone है, laptop है, you are like बस दुनिया खत्म हो गई, and you're on to your gadgets and you're not moving. So this is another major reason. क्या होगा, डाइट बुरी है, वेट गेन हो जाएगा. ना हो हार्मोन इम्बैलेंस, वेट गेन हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा. फिजिकल इनएक्टिविटी है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हुआ तो वेट गेन हो जाएगा, और वेट गेन हुआ तो इम्बैलेंस हो जाएगा. जेनेटिक टेंडेंसी भी ज्यादा हो सकती है. हो सकता है आपकी मदर को, आपकी पहली फीमेल्स को फैमिली में इशू हो इस तरह का तो उनको जेनेटिक टेंडेंसी बड़ी ज्यादा होगी. उनके लिए, जिनकी भी फैमिली में इश्यूज होते हैं ऑलरेडी, उनके लिए जो है वो मोर प्रोन टू होते हैं अदर प्रॉब्लम्स. लाइक जिनको डायबिटीज है, जिनकी फैमिली में, वो डायबिटीज के चांसेस उनको ज्यादा होंगे. जिनको हार्ट डिजीजेस है, उनको हार्ट डिजीजेस के चांसेस ज्यादा होंगे. देन अगेन इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग. आजकल
बॉडीज में अगर आप देखें मोटापा तो एक तरफ है, लिपिड मतलब आपका फैट कंटेंट आपकी बॉडी का बड़ा ज्यादा हो गया है, चिकनाई हो गई, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें इन्फ्लेमेशन हो रही है, वाटर रिटेंशन हो रही है बॉडी। तो ये भी हमारे बहुत सी वजूहात हैं इसमें भी कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाती है, स्वेलिंग क्यों हो जाती है। This is because of your diet sometimes too, and this is because of your stress factor too. तो जब इन्फ्लेमेशन हो गई बॉडी में, स्वेलिंग है, वो फौरन आपके पेल्विक एरिया की तरफ जाएगी, और जब वो आपके पेल्विक एरिया की तरफ जाएगी, दैट इज योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हो गया टू our part. So what is the prevention and cure? Let the hormonal imbalance fly like this bird. Let it fly. Naturopathy. What is naturopathy? Exactly, Fiza had defined that it is the combination of modern treatment with traditional methods. मॉडर्न, अभी आपने पूछा मुझे किसके पास जाना चाहिए, मॉडर्न ट्रीटमेंट ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जी, आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स 21 डेज की मेडिसिन होती हैं, उनके ऊपर दिन लिखे हुए होते हैं, देखने में वो भी प्यारी होती हैं, वैसे मतलब अपार्ट। सो उसके अलावा आपको मेटफॉर्मिन देंगे डॉक्टर, 2 तरह की ट्रीटमेंट पीसीओएस के लिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए कहीं भी, आपको वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे 21 डेज की, वो आपके पास लेबल्ड पिल्स होती हैं, और साथ वो आपको मेटफॉर्मिन दे देंगे ग्लूकोफेज के नाम पे मेजरली जो इस वक्त है। वो मेटफॉर्मिन का काम क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपकी बॉडी में कम कर सके, बिकॉज यू आर हैविंग whenever you are having a hormonal imbalance you get to get insulin resistance. सो वो ग्लूकोफेज देंगे जी, आप कम से कम खाएं, आपकी एपेटाइट को कम करने के लिए, सटाइटी को इंक्रीज करने के लिए, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे ताकि अगर किसी को लेट से हार्मोनल इश्यूज और वो सब कुछ हो रहा है तो उसके लिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे देंगे ताकि वो उसका रिकवर हो जाए। जैसे कि जब डेट्स पे नहीं आ रहे होते या कई कई महीने स्किप हो होते हैं, तो जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं उनके उस मंथ में आ जाते हैं, अगली दफा वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं लेते, नहीं आते। तो फिर हम उसको साथ मिलाते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है जी, अम्मा अब्बा के घर के टोटके, राइट। सो यानी ऐसे टोटके जो हमारे मेजरली घरों में अपनाए जाते हैं, उनको हम मिलाते हैं जब मॉडर्न मेडिसिन के साथ, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी कहीं भी ये नहीं कहती है एलोपैथी की तरह, एलोपैथी इज द मॉडर्न मेडिसिन। एलोपैथी की तरह नेचुरोपैथी कहीं भी नहीं कहती कि भाई नहीं आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले सकते। नो, दिस इज नॉट द पॉइंट। वी वांट यू टू गिव clean diet with some of the herbs. Those can be taken as medicine, and we want to focus on your health, right? आपके पास 3 तरह की कमीज हैं, आपके पास एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, और नेचुरोपैथी यानी आपके पास ग्रीक मेडिसिन है, आपके पास हर्बल मेडिसिन है। इन तीनों को मिला के जो है हमारे यहाँ आपकी अमूमन थेरेपीज जाती हैं। हाँ, बहुत से केसेस में मेडिकल केसेस में आपको एक वक्त में एक ही तरह की ओके हाँ जी बिल्कुल टेस्ट होते हैं, आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल के टेस्ट होते हैं, आपके एस्ट्रोजन लेवल के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं सारे। अच्छा, अब उसके अंदर आपका तीनों तरह की मेडिसिन में हम ये फिगर आउट करते हैं, ये टारगेट करते हैं। जैसे उन्होंने अभी कहा, अभी वो फील कर रही हैं कि जी ये सब चीजें मुझे महसूस होती हैं कि मुझे हो रही हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें कहेंगे अभी मसला ज्यादा नहीं बिगड़ा। देखें हमारे पास एक केस स्टडी आई है, मसला बिगड़ा नहीं है अभी, शी इज जस्ट हैविंग सम ऑफ द इश्यूज विद द फ्लो। तो हम उसे कह देंगे आप क्लीन डाइट लेंगी, और दूसरी चीज क्लीन डाइट के साथ आप कुछ हर्ब्स चीजें अपनी डाइट में ऐड करें। अगर ये केस उनका 2-3 महीने में उनको नॉर्मल फील नहीं होता क्लीन डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ, तो फिर हम उन्हें कहेंगे अच्छा फिर आपके लिए ना कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट करनी चाहिए। फिर हर्बल मेडिसिन भी हैं, ठीक है। आज हम मेडिसिन की बात नहीं करेंगे, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, और एक लम्हे में इसको समराइज करना या एक लेक्चर में इसको समराइज करना पॉसिबल नहीं। सो हमारे पास जो है हर्बल मेडिसिन आ जाती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन आ जाती हैं, पूरे पूरे कोर्सेज होते हैं, एंड फिर हमारे पास एलोपैथिक मेडिसिन आ जाती हैं। अगेन यू हैव टू फर्स्ट चूज वेयर यू वांट टू। अच्छा, इसके अंदर जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं, अब हम बात करेंगे हर्बल मेडिसिन की, तो उसके अंदर प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और एनिमल एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। एनिमल एक्सट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, जैसे अगर आपको बहुत महीने अगर आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपके पीरियड्स हैं वो नहीं आ रहे या इरेगुलर आ रहे हैं, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है वो लिवर लें,
चिकन उसका मटन का लिवर ले लें या बीफ का लिवर ले लें, यानी जो हमारे पास कलेजी होती है, तो वो दैट इज आयरन रिच, वो लेकिन वो ऑर्गन मीट है, ठीक है, तो वो एज अ ट्रीटमेंट दी जाती है। और कई मेडिसिन में, हर्बल मेडिसिन के अंदर उसको ड्राई करके उसका पाउडर भी ऐड किया जाता है। So there are the animal extracts and the plant extracts. Plant तो exactly वहाँ पे plant के leaves भी हैं crushed हुए हुए। आपको 2-3 तरह की मेडिसिन मिलती हैं हर्बल में, यू नो दैट। एक फक्की होती है दैट इज जस्ट लाइक पाउडर, एक मजून होती है दैट इज लाइक सेमी सॉलिड से स्टेट में होती है, एंड देन यू थिर्डली हैव द syrups and the tablets or capsules, right? So the problem with herbal medicine over here is, what I would suggest is कि आपके पास कभी powdered form में अगर उनकी solutions हो तो take in the powdered form, क्योंकि syrups के अंदर बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट होता है, स्पेशली हर्बल मेडिसिन की बात करें मैं। हर्बल मेडिसिन में अगर आपने कभी घरों में इस्तेमाल किया हो, जैसे बहुत ज्यादा घरों में इस्तेमाल होता है, दूध से आए हैं गले के लिए, या इस तरह के बहुत से सिरप हैं, तो आप कभी देखिएगा कि वो बहुत मीठे होते हैं, यानी उसके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत हाई होता है, लेकिन क्योंकि वो मेडिसिन है इम्पैक्ट कम होगा, बट स्टिल क्योंकि बीइंग अ डाइटिशियन वी डू नॉट रिकमेंड हाई अमाउंट ऑफ शुगर, सो आई विल नेवर से कि आप सिरप्स के लिए जाएं, वो भी स्पेशली हर्बल मेडिसिन में। गो फॉर द पाउडर्ड सॉल्यूशंस। ओके, होम्योपैथिक एक डिफरेंट उनका है, दे हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस, उनका अल्कोहल सॉल्यूशंस होते हैं और उसके अंदर वो कुछ ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन डालते हैं, तो उनकी उनकी टेबलेट्स होती हैं और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन होती है, मतलब बड़ी एक होम्योपैथिक इज अ डिफरेंट मेथड एल्स देन द होम हर्बल मेडिसिन एंड एल्स देन द एलोपैथिक। होम्योपैथिक के अंदर अल्कोहल सॉल्यूशंस के साथ काम किया जाता है और बहुत उनके ड्रॉपर्स की फॉर्म में उनकी मेडिसिन होती हैं, बट बहुत इफेक्टिव होती है। दोज आर आल्सो द इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। अच्छा जी, अब हम आगे इस ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले अगर किसी को हार्मोनल इशू हो गया तो जो रिसर्च से प्रूवन उसका सोल्यूशन है, अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम लास्ट 40 years people are using it, and 95% of the female who really do the sleep cycle with proper precautions I'm saying, इट डज नॉट मीन कि जाके आपने बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, आपने घर बैठे रहना है, अजीब अजीब सी वीडियोस देखनी है, और मतलब द मीडिया हैज सो मच इम्पैक्ट ऑन योर हार्मोनल हेल्थ। आप क्या देखते हैं उससे आपकी सोच क्या बनती है, और उस सोच की वजह से आपकी बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। सो इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस, नो ट्रीटमेंट कैन वर्क। सिंपली if you are not ready to change your life cycle, your life pattern, तो आपकी चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे हर्बल हो, कोई मसला हल नहीं होने वाला, आई एम टेलिंग यू। तो करें ना ट्रीटमेंट, ऐसे आप अपना भी वक्त जाए। दिस यू नीड, इट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, एल्स यू विल नॉट गेट द सॉल्यूशन। आपको ओके ओके, सो आपको पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। मुझे सोना कब है, मुझे जागना कब है। अब मैं आपको बताती हूँ, इफ यू आर स्लीपिंग लेट एट नाइट एंड यू आर not waking up early, it means your hormones will get imbalanced. Now what is the problem? Now we ask, मैं तो बहुत अच्छा खा रही हूँ, डाइटिंग में बड़ी अच्छी कर रही हूँ, फिजिकल एक्टिविटी में वर्कआउट भी कर रही हूँ, मैं वॉक भी कर रही हूँ, मसला क्या है? सारी सारी रात आप सोती नहीं है, जागती आप लेट है। हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि हमारे हार्मोन सर्कैडियन पैटर्न पे चलते हैं। इट मींस दैट 24 आवर्स के अंदर उनका एक पैटर्न है। एक हार्मोन है जिन्होंने रात को जो है वो सिक्रीट होना है, एक हार्मोन है जिन्होंने मॉर्निंग में सिक्रीट होना है। मॉर्निंग में आप उठे ही नहीं है, हार्मोन्स बेचारे क्या, लेट मॉर्निंग आप उठ रहे हैं, लेट मॉर्निंग में फिर आपको घंटे 2-2 घंटे आप नाश्ता नहीं कर रहे, या नाश्ता स्किप हो रहा है क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी जाना है, बिल्कुल टाइम से ही उठे हैं आप यूनिवर्सिटी जाने के। तो ये सब मसाइल आपके हार्मोन्स और आपकी बॉडी को, और ऐसे तो नहीं हमारी पूरी पॉपुलेशन के लिए मसला बन गया, यानी विद इन अ जनरेशन इज लाइक ऑफ 30 years, ठीक है। तो हमारी पीछे 30 years पीछे जाए जो जनरेशन थी, दैट वाज फार बेटर देन अस। क्यों? क्योंकि उनके पास, अगर 30 years पहले हम पाकिस्तान में जाएं तो हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, वी डिडंट हैव दोज फोन्स इन आवर हैंड, राइट।
वो आई गेस वो 33-10 होता होगा उस वक्त, लेकिन उस पे भी स्नेक वाली गेम होती थी और वो पता नहीं आई गेस लाइक स्टिल अगर आप फोकस नहीं करेंगे ना तो यू आर इन अ मेस, राइट? सो आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न भी ठीक करना है, आपको उठते साथ पहले 1 घंटे के अंदर नाश्ता करना है, ठीक है? यानी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट आवर ऑफ वेकिंग के अंदर अपना ब्रेकफास्ट करें। यू हैव टू टेक ब्रेकफास्ट हैवी, आपको अच्छा नाश्ता करना है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होना होता है, वो आपके मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज आपकी डाइट से नहीं होना, उसने होना ही होना है। तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है उसने स्पीड अप होना है, तो स्पीड अप होने के अंदर आपको ज्यादा खाना खाना है, फिर वो स्लो डाउन होगा आपकी लंच तक, फिर थोड़ा कम खाना आपको, फिर डिनर पे वो बहुत कम हो जाएगा। दैट इज वाई एट डिनर यू हैव टू टेक वेरी लाइट डिनर। हम ऑपोजिट कर रहे होते हैं, डिनर हम खूब जम के करते हैं। So if you are ready to take all of these precautions, then we can move to treatment, and treatment is called, one of the treatment is called sleep cycle.